morning. Good morning. A very, Good very happy morning. सब आंटी का एक ओमकारा सुन Good morning, bete. Yes. Good morning. How's everyone? all Was good, all Sunday a very fun good. day for Good everyone? morning. Today is Monday, a fun day. And also wish you a very happy Guru Purab. Today we have a festival. It's also a full moon. And in the north, of course, people celebrate Guru Purab. It's a very auspicious full moon again. So just wanted to remind all of you that today being a very powerful day, you want to make any declaration, scripting, affirmation, prayers, meditation, anything you can do today. And the full moon is all of today and of course tomorrow till evening. So we have today and tomorrow throughout the day if you just want to have some strong declarations, some affirmations, or whatever it is that you want to do. I always say that New Year की wait मत करो बिल्कुल भी कि कुछ भी accomplish करना है life में या कोई short term goal है अभी से करने लग जाओ. तो मैंने अपने declarations already कल कर दिए कि मुझे by New Year's what are the things I want to accomplish. उसमें से एक मेरा fitness goal था to have a lot of lean weight. And uske liye the process has begun already. I straight away went to the gym after the session yesterday and I paid all the money. And I did a great workout yesterday in the gym with the trainer. I sat with him, made the plan. Although I could have said it's a Sunday, Monday से शुरू करेंगे क्योंकि gym सुबह बहुत थोड़ी देर के लिए खुलता है. So उस तरह वो वाला गोल कर लिया. मैंने अपना financial goal set कर लिया that by 31st of December this year, this is how much I'm going to be having in my bank account. I don't know, universe को application डाल दी है. So it is universe's work to do it, not mine. But I will be in alignment. जो मैंने promise किया है अपने आप को is that I will be in alignment with the universe. I will be in a high frequency. I will not let my frequency go low, no matter what it takes out of me to do that. So अपने अपने तरीके से fitness goal, financial goal, career goal I have made for myself. What are the things I want to accomplish at work? What are the new things that I want to do? Personal growth के लिए मैंने goal कर लिया कल कि by 31st of December, how much I have to train myself into becoming, whatever I have thought to myself. So that is how it is. I don't know why people wait for the New Year's that ये साल हम ऐसा करेंगे, ये साल हम वैसा करेंगे, कल से हम ये करेंगे, परसों से हम डाइट करेंगे, फेस्टिवल हो जाएगा, फिर मंडे से हम ये करेंगे. So no, you don't have to wait because tomorrow never comes. Just start doing it and enter into the new year 2024 with a very blissful, amazing kind of, success story to hold in your life. So do that, and today is the day to do it because it's a full moon, very very powerful. Full moon बहुत magnetic होता है. आप इसमें जो सोचते हो, जो लिखते हो, जो repeat करते हो, जो declaration करते हो universe को, वो definitely बहुत जल्दी fulfill होती है. But उसके साथ में to be in the high frequency or be in the gratitude zone is also very important. और इसीलिए आज का chapter बहुत जरूरी है कि जब हम अपने बारे में सोचेंगे फाइनली, नॉट अबाउट एनीवन एल्स, व्हाट इज इट दैट आई नीड टू बिकम, मेरी क्या लिमिटेशंस हैं जो मुझको हटानी है, वर्क करने की जरूरत है. हम सबके लाइफ में हमें लिमिटेशंस हैं. हो सकता है एंगर इश्यूज हो हमारे अंदर, हो सकता है फियर है, हो सकता है बहुत ज्यादा एंजाइटी है, कुड बी एनीथिंग फॉर दैट मैटर. कुछ ना कुछ कमियां हम सब में है. हो सकता है हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं है और हम चाहते हैं उसको अच्छा करना. हो सकता है हमें बहुत सारे अच्छे न्यू फ्रेंड्स बनाने हो क्योंकि हमारी लाइफ में ज्यादा दोस्त नहीं है. मीनिंगफुल फ्रेंड्स बनाने हो सकता है हमें कोई रिलेशनशिप अपनी बहुत अच्छी करनी हो. सो वॉट एवर इट इज, टुडे इज द डे. एंजॉय द पावर ऑफ द फुल मून. And that's all of today and all of tomorrow. और full moon का effect next 48 hours तक रहता है. So it's not that. But then today we will have to give time. बहुत अच्छा दिन है आज. एक तो मेरा वर्क भी है जिसमें हम अपने आप को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं. फाइनली ठीक है, हमने सबको ग्रैटिट्यूड किया बचपन से लेके अभी तक. जो लोग थे, पेरेंट्स को, जो हेल्थ थी हमारी, अपने करियर के लिए, अपने वर्क के लिए, हमारे घर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए, उन लोगों को हमने थैंक यू बोला जिनकी वजह से, जो हु हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग आवर लाइव्स टू वेयर वी आर टुडे.
हमने सबको बोला थैंक यू अभी तक 27 चैप्टर्स तक, तो है ना 28 26 चैप्टर्स तक। तो आज वाला जो चैप्टर है 27, इसमें अब फाइनली वी आर गोइंग इनवर्ड्स, और हम अपनी तारीफ कर रहे हैं और अपने आप को थैंक यू बोल रहे हैं फॉर हु वी आर विथ ऑल आवर फ्लॉज एंड लिमिटेशंस। ओके, विथ ऑल आवर फ्लॉज वट एवर, आई मीन nobody is perfect. So जो कमी हमारे अंदर है, हम काले हैं, गोरे हैं, शॉर्ट हैं, टॉल हैं, मोटे हैं, पतले हैं, जैसी हमारी बॉडी, हमारी आंखें छोटी हैं, हमारे नाक बहुत बड़ी है, जैसा भी है, जो भी है, जो हमारे फ्लॉज है, उसके साथ अपने आप से प्यार करना, so that we can like change the relationship we've had with ourselves. So changing the relationship that we have with ourselves is very important to move forward in life. उसके बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपने आप से रिश्ता इतना बढ़िया होना चाहिए, अपने आप से इतना प्यार होना चाहिए, और जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं तब तक कोई हमसे प्यार नहीं करेगा दिल से, ठीक है। हाँ, अनकंडीशनली देयर आर पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ कोर्स हु लव अस, बट लविंग आवरसेल्व्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Only then that growth factor comes into our life, and that internally हम अंदर से grow होने लग जाते हैं, और हमारी जो कमी होती है हम उनको दूर करते हैं, and we stand tall as a single individual, which is so important. So stand tall as a single individual. Of course, सारे जो हमारे परिवार वाले लोग हैं, friends हैं, family है, they are all assortments to us. But the most important person, the main course is always I, me and myself. Okay, that has to be the most. कितना भी मेरा वर्क कर लो, अगर फियर है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है अंदर, कुछ कुछ चल रहा है, आप अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, तो फिर फायदा क्या है ना। तो इसलिए अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप देखना कि जैसे दूध में से मलाई आती है ना, वैसे सरफेस पे हमारी सारी लिमिटेशंस आने लग जाती हैं, वो हटने के लिए आती हैं। जब तक दूध में से मलाई ऊपर नहीं आती है तब तक आप उसको हटा नहीं सकते ना। सो अपने आप वो सारी चीजें आएंगी जब ग्रैटिट्यूड वर्ल्ड में होते हैं, एंड देन इट मेक्स अस रियलाइज दैट ओ दिस इज व्हाट आई नीड टू वर्क अपॉन, सो आई ट्राई टू बेटर माई सेल्फ एवरी डे. So that is what it is. So self growth, self evolution, self improvement, okay, all these things are a constant process, but making peace with who we are intrinsically is very very important. Okay, so हम ये पढ़ते हैं आज का beautiful chapter, the mirror work. So हमने, प्रिया ने बताया था केजे इज रीडिंग, मैंने कहा अरे करण जौहर कैसे आ गए हमारे सेशन में, शुरू करना चाहिए. मैंने कहा वाह, करण जौहर आ गए हमारे सेशन में. Okay, good morning everyone. Day Good 27, morning. the mirror work. The magic mirror. Magic. मेरा वर्क होता है वो, लेकिन चैप्टर का नाम द मैजिक मिरर है. The magic. ओके, सो इसमें हमने ये मिरर देख रहे हैं, शीशा. तो ये शीशे के सामने ही खड़े कर प्रैक्टिस है. बहुत सारे लोग इसको सेल्फी कैमरा में देख के करते हैं, बट सेल्फी कैमरा में नहीं देख के कीजिए, आप शीशे में देख के कीजिए. सेल्फी कैमरा अगर आप ट्रैवल पे हैं, आपके आसपास कोई शीशा नहीं है, तब आप सेल्फी कैमरे में कर सकते हो. सो इसमें इस कमरे में अंधेरा अंधेरा जैसा है, ठीक है, दैट विच सिग्निफाइज दैट जो भी सिचुएशन है हमारी लाइफ की, और इसमें एक ब्लैक शूज रखे हुए, एक व्हाइट शूज रखे हुए, चाहे आपकी कमियां हो, चाहे आपकी स्ट्रेंथ्स हो, उन दोनों के साथ आपको उसके स्टेप इनटू योर शूज एंड लुक इनटू द मिरर एंड से थैंक यू. दैट मीन्स विथ ऑल योर लिमिटेशंस आल्सो एंड विथ ऑल योर स्ट्रेंथ्स आल्सो. सब में सब कुछ, दोनों चीजें होती है. उसके साथ में द पर्सन इन द मिरर को देख के हमको उस पर्सन को बोलना है यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड आई रियली लव यू फॉर हु यू आर. और उसको देख के हमको उसकी तारीफ करनी है. जो टूटा हुआ हमसे नहीं होता है, वो हाथ वाला है तो बड़ा तो है, यहाँ तो हाथ वाला भी छोटा है, पहुंचेगा भी नहीं पीछे. हाँ Okay. जी, एक I सेकेंड. start. Okay, good morning again. The हाँ. appearance of things changes according to the emotions, and thus we see magic and beauty in them, while the magic and beauties are really in ourselves. Unquote. Khalil Gibran.
poet and artist. You can spend the rest of your life running around trying to beat the outside world into the shape you want, chasing one problem after another, trying to fix them, complaining about situations and other people, and never succeed in living your life to the fullest, realizing all of your dreams. But when you make the magic of gratitude your way of life, everything in the world around you magically changes. Just like that, your world magically changes because you changed. So what you are attracting changed too. In the inspirational words of Gandhi, uh, इसके बाद वो ओवरलैप हो रहा है, एक मिनट. Gandhi and in the lyrics of Michael Jackson's song, quote, "Man in the world's mirror," unquote, which impacted hundreds or millions. One of the most powerful messages of all time was delivered. Change the person in the mirror, and your world will change. If you have followed the 26 magical practices in this point, you have changed. And even though it is sometimes hard to see the changes in yourselves, you will have felt the change in your happiness, and you will have in seen the change of improved circumstances in your life, and the magical changes in the world around you. You have practiced the magical power of gratitude for your family and friends, for your work, money, health, and for your dreams, and even for the people you come across each day. But the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. When you are grateful to be the person in the mirror, feelings of dissatisfaction, discontentment, disappointment, or I am not good enough completely disappears. And with them, each dissatisfying, discontenting, and disappointing circumstances in your life magically disappears too. Negative feelings about your cause the greatest damage to your life because they are more powerful than any feelings you have about anything or anyone else. Whenever you go or whatever you do, you take those negative feelings with you in every moment, and those feelings tend everything you touch. Mm. And they act as a magnet and attract more dissatisfaction, discontentment, disappointment with everything you do. When you are gratitude to be you, you will only attract circumstances that makes you feel even better about yourself. You have to be rich with good feeling about yourself to bring the riches of life of your gratitude. Gratitude for yourself enriches you. तो कल्पना जी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, एक बार या ये मैंने हाईलाइट किया है ना स्पेशली, तो आप इसको दोबारा से पढ़िए ठीक से. Okay, okay. Wednesday. हाँ वैन से. Oh, okay. Okay. When you are grateful to you, you will only attract To be circumstances you. that When makes you're you feel grateful to be you. even better about yourself. You will only attract circumstances that makes you feel even better about you. You have to be rich with good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. I quote, "Whoever has gratitude for themselves will give more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she has
will be taken from him or her, unquote. To do the magic mirror practice, go to the mirror right now. Look directly at the person in the mirror and out loud say the magic words, thank you, with all your hearts. Mean it more than you ever have before. Say thank you for being you. Say thank you for everything that you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you have used for everything and everyone else. Be grateful for you just as you are. Continue with the magic mirror practice by being grateful to that beautiful person in the mirror for the rest of your day today. And say magic words, thank you, every time you look at yourself in the mirror. If you are not in a position to say the magic word out loud any particular time, then you can say them in your mind. And if you are really brave, you can look in the magic mirror and say three things about yourself that you are grateful for. If for any reason in the future you are not being kind to yourself, you will know to give to the one person who deserves the gratitude more than anyone else, the person in the mirror. When you are grateful, you don't blame yourself when you make a mistake. When you are grateful, you do not criticize yourself when you are not perfect. When you are grateful for being you, you're happy and you will become a magnet to happy people, happy situations, and magical circumstances which will surround you wherever you go, in whatever you do. When you can see the magic in that person in the mirror, the whole world will change. So, Kalpana ji, this is your whole world will change. It's a different meaning altogether. Please read this Okay. again. When you This can one. see. Okay. When you can see the magic in that person in the mirror, your whole world will change. The magic practice number 27, the magic mirror. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Second, each time you look at yourself in a mirror today, say thank you and mean it more than you ever have before. Third, if you are really brave, while looking in the mirror, say three things you are grateful for about yourself. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Kalpana ji. But you Thank missed you. some words that were of Yeah. great relevance. So it Okay. doesn't matter. Next time we can be Yeah, careful. sure. Yeah. Okay, thanks. Yeah. Thank you so much for reading. But you have a loud, clear voice, which is so beautiful. Thank you. Okay, so here talking about Khalil Gibran's, so he's written a lot. He's a beautiful poet, and he says appearance of things changes according to emotions. है ना? अगर आप बहुत खुश हो तो आपको ट्रैफिक भी बहुत अच्छा लगता है. अगर आप हॉलिडे पे गए हो वहां पे बर्फ पड़ गई है, आप एक तरफ ये बोल मतलब मूड बहुत अच्छा होगा तो आप बोलोगे वाओ हमको तो कभी स्नोफॉल दिखती नहीं है, यहाँ पे दिख रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है. ठीक है, सो जो भी आउटसाइड सर्कमस्टांसेस हैं वो डिफरेंटली अपेयर होते हैं ना अकॉर्डिंग टू आवर मूड. अगर खुश हैं तो सारी चीजें अच्छी अच्छी दिखेंगी, अगर बहुत नेगेटिव है अंदर तो हमको हर तरफ मतलब हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं गार्डन में उसकी तरफ भी, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है कि अंदर से क्या चल रहा है. टर्मोइल
या हैप्पीनेस, उस पे डिपेंड करता है। मतलब हमारा आंखों को देखने का, आंखों से देखने का नजरिया, द कलर ऑफ द आईज विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ग्लासेस दैट वी आर वेयरिंग एंड द ग्लासेस वी चूज टू वेयर. We want to wear a green one, please wear a green one. If you want to wear a red one, wear a red one. That means अच्छे अच्छे रंग बिरंगे ग्लासेस पहनो, इसका मतलब है अपने दिल को साफ रखो। ठीक है, जब अंदर से पीस, हैप्पीनेस, कंफर्ट होता है तो हमें सब कुछ बाहर पीस, हैप्पीनेस और कंफर्ट में ही नजर आएगा। फिर कंप्लेनिंग एटीट्यूड वैसे भी नहीं होता है। So this is so important that, you know, they say that to see the magic and beauty in the outside world, actually magic and beauty अंदर से create करनी होती है। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, madly fall in love with yourself, जब तक वो situation नहीं आती है, तब तक हमको mirror work practice करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और मिरर में अपनी आंखों से आंखें मिला के, you have to look into your eyes and you have to say that, wow, what a person you are. Thank you so much. Thank you for who you are. Thank you for all the traits, qualities that you have. Thank you for being you. Thank you for coming into this world and making a difference. Thank you for constantly working to improve yourself. Thank you that you are such a beautiful person. Thank you for all the accomplishments that you have done in your life. Thank you for all the relationships you have maintained in your life. Thank you for just being you. You are the best person in this whole big world. Okay, so this is what you have to look into your eyes and tell to yourself. And this is so important. Slowly, slowly, we will see that we are changing as a person and we are so happy. तो हमारे अंदर जो dissatisfaction, discontentment, वो सारी चीजें हमारी dissipate होने लग जाती है, जो भी negativity थी। और ये practice बहुत बाद में इसीलिए आती है because हम arrogant नहीं है। हमने पूरी दुनिया को पहले थैंक यू बोला है, हमने लोगों को थैंक यू बोला है, हमने मनी को थैंक यू बोला है, हमने हेल्थ को थैंक यू बोला है, हमने सबको थैंक यू बोला है। उसके बाद हम आखिर में, ये प्रैक्टिकली लास्ट चैप्टर है बिकॉज कल का चैप्टर तो हमको यही बताएगा गोइंग फॉरवर्ड अब हमको ज्यादा ग्रैटिट्यूड लिखने की जरूरत है। टुमारो वाला जो चैप्टर है कल वाला, उसमें बस हमको यही सीखना है। तो प्रैक्टिकली ये असाइनमेंट हमारा लास्ट असाइनमेंट होता है इस बुक का। तो इसीलिए ये एंड में आया है कि आपने पूरी दुनिया की हर एक चीज को थैंक यू बोल दिया है, उसके बाद अब आपका नंबर है। अगर पहले आया होता तो इसको एरोगेंस बोलते हैं कि आपको किसी और से मतलब नहीं है, आप बस अपने आप को सेल्फ प्रेज और अपने आप को थैंक यू बोले जा रहे हो। तो इसीलिए ये चैप्टर लास्ट में आता है। नाउ इट इज नॉट arrogance, it is self-worth, self-dignity, self-love and self-respect that we deserve to give to ourselves because we have troubled ourselves a lot all our lives, tortured our bodies, abused by eating ulta seedha khana kabhi kabhi, not treated ourselves, we've been sedentary, not working out, not walking, nothing. Emotionally we have tortured ourselves a lot, we have berated ourselves, we have looked down upon ourselves, we have blamed ourselves, we have not had self-dignity and self-worth most of the time in our life. Okay, so we thought that I'm not good enough, there are some things that I'm not able to do, my life is full of problems. So things like this we may have, not necessary that aap sabka aisa waisa attitude tha, बट वी मे हैव डन दैट। हमने बहुत रोना धोना किया है, आंसू, टीयरिंग हियर एंड देयर, ये सब बहुत किया है हमने, अपने आप को लुक डाउन करके अपने आप को टॉर्चर किया है। जबकि एज सच लाइफ में कोई चीज परमानेंट नहीं होती है, एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी, सब चीज जाने के लिए ही आती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जो टिकती है, सब चीज जाने के लिए आती है। लेकिन फिर भी हम हुक्ड ऑन हुए कुछ सिचुएशन से और हमने अपने आप को टॉर्चर किया। सो टुडेज चैप्टर इज जस्ट अबाउट that we have to now start developing a different relationship with ourselves and बहुत सारा self love हमको cultivate करने की जरूरत है और इसके लिए strive करना पड़ता है। It doesn't come very easily. ये practice रोज करने के बाद आपका अपने आप से रिश्ता change हो जाएगा, आपके चलने बैठने उठने का तरीका change हो जाएगा and you will see that you know that reflect in the outside world because बाहर की दुनिया हमारा reflection होती है। जैसे शीशे में देखते हैं ना, जब शीशे में अगर आप लेफ्ट टर्न करोगे तो शीशे में भी वो पर्सन टर्न हो जाता है एग्जैक्टली उसी एंगल और उसी प्रोपोर्शन और उसी डिग्री में। सिमिलरली हमारी जो पूरी बाहर की दुनिया है वो हमारा सोल रिफ्लेक्शन होती है। जो सोल यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में जो डेटा फीड है
वही पिक्चर डाउनलोड हो रही है इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट. सो जो पीपल, सर्कमस्टांसेस, आपकी जॉब सिचुएशन, आपकी रिलेशनशिप सिचुएशन, आपके फियर फैक्टर्स, आपके जो भी चीज है बाहर, वो सब अंदर आपकी सोल का रिफ्लेक्शन है, एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन. ठीक है. अगर आप बहुत बोर होते हो जिंदगी में, इसका मतलब है आप अपनी खुद की कंपनी एंजॉय नहीं करते हो, तभी आपको बोरिंग वाले फेजेस आ रहे हैं. जिस दिन आप अपनी खुद की कंपनी बहुत एंजॉय, यू कैन हैव अ ब्लास्ट विथ योरसेल्फ. You know, it is so good to stay alone sometimes. It is so good to have the me time. So why do I self drive my car? This is the reason. Because that time I get, which is only to myself and for myself, and I can think anything, I can sing any song, I can, you know, plan my day ahead, I can talk to myself that way. So वो सेल्फ ड्राइव का टाइम बहुत मी टाइम होता है. तो हम सबको अपना मी टाइम कैप्चर करना पड़ता है अपने पूरी दिन भर में से, वेर यूर जस्ट स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ. और अपनी कंपनी को सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी बनाना होता है. I mean, when you're spending time with yourself, that is the best time. You know, when I travel alone, so I get to do it by default because मेरा तो काम ही ऐसा है कि मुझको, like I have like 105 offices on me, तो मुझे किसी ना किसी ऑफिस को विजिट करना होता है हफ्ते में एक दिन. So I have to fly a lot. So by default वैसा होता है that I am traveling alone, you know, unintentionally. But I love my time in the hotel and I crave to go back to my room, be with myself. सुबह का जो टाइम होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. सुबह तो हम सब 4-4:30 बजे उठ जाते हैं. So I'm in the hotel room, and you know that time between 4 to 9:30 is like my favorite time of the day. And where you can do anything, you can write, you can dance, you can work out, you can be with yourself. आप अपना magical day करो. तो अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखना, that wow, I'm with myself. और जिस दिन आपको ऐसे लग रहा है मैं बोर हो रही हूँ, मेरे पास कुछ करने को नहीं है, इसका मतलब है जिसको आपको खुद आपकी कंपनी नहीं पसंद है, तो लोगों को आपकी कंपनी कैसे पसंद आएगी? They'll find you very boring, right? Because outside world is your internal reflection. So इसलिए अपनी रिलेशनशिप अपने आप से बदलना बहुत जरूरी होती है, that you enjoy yourself, you have a blast with your own time. And that is the best thing. I don't know why people are so hooked on to each other, because इससे फिर बहुत expectations होती हैं और लोगों की जिंदगी आप बर्बाद करोगे अपने आसपास की, when you're thinking that okay, you know, a certain person behaves like this to make me loved and make me feel happy and comply to all my nakhras and things like that. It doesn't work like that. Okay, वो बेचारे कंपल्जन के कारण आपके साथ हैं, वो इसलिए नहीं है कि उनको आपके साथ मजा आ रहा है. So that is how it is, because आपको अपने साथ मजा नहीं आता. तो इसीलिए आज की प्रैक्टिस मेरा वर्क है जिसमें आप अपने साथ मजे करोगे. और मतलब 1-2 दिन भी अगर रहना पड़े अकेले, तो इट शुड बी द मोस्ट जॉयफुल टाइम of your, you know, year, that 2 days that you got to spend with yourself. And it is so much fun. Have fun with yourself. That's very, very important. So to reach that level of not just accepting yourself, but also have fun. Enjoy that time that we have with us. वो तभी आता है जब बहुत सारा सेल्फ लव होता है. वही तो हम कल्टिवेट कर रहे हैं ना धीरे धीरे. सो इसीलिए इसमें बहुत ये अच्छी लाइन है जो पहला वाला है, that आप अपनी पूरी जिंदगी you can try and run around chasing the outside world and trying to shape it according to the way you want. है ना, कि ये पर्सन ऐसे बिहेव करे, वो मुझे बहुत लव दे, वो मुझे ऐसे करे, मेरे ऑफिस में बॉस को ऐसे करना चाहिए, मेरा काम ऐसा चलना चाहिए, मेरा वो ऐसे चलना चाहिए. कुछ नहीं चलेगा. पूरी जिंदगी अगर हम ये करते रहेंगे, it will not. That's what it says. You can spend the rest of your life running around, try to beat the outside world into the shape you want, but you can't, because problem तो आपके अंदर है ना. सो उसके ऐसे में एक प्रॉब्लम आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर देखा ना हमने ऐसी लाइफ लीड की हुई है ना पहले, जब तक ये बुक्स हमारे लाइफ में नहीं आई थी तब तक ऐसे ही था. एक प्रॉब्लम होती थी, वो खत्म नहीं होती थी, अब दूसरा कुछ शुरू हो गया, वो खत्म हो गया, फिर तीसरा कुछ शुरू हो गया. वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि बाहर की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन इसीलिए बार बार आ रही है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट मन के अंदर है, हमारे अंदर है. हमारे अंदर जब वो कॉन्फ्लिक्ट चला जाता है, अपने आप बाहर की दुनिया बहुत ईजी हो जाती है ना. उसके लिए हम एफर्मेशन भी बोलते ही हैं, लाइफ इज ब्यूटीफुल, इजी एंड एफर्टलेस. लेकिन अंदर अगर वो ये इमोशनल एक कुछ चल रहा है, तो फिर उसको तो सेटल करना ही पड़ेगा ना. तो उसमें सेल्फ लव कल्टीवेट करना उसके लिए बहुत जरूरी होती है.
ठीक है। और अगर हम बाहर की चीजें ही फिक्स करते रहेंगे, हमें लगेगा ये पर्सन ऐसे बिहेव करे, ये मेरे लिए ऐसे करे, ये वैसे करे, ये ऐसे करे, ये इतनी बजे क्यों उठ रहा है, ये इतनी बजे क्यों सो रहा है, ये इसने मुझको आई लव यू क्यों नहीं बोला, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे लिए बर्थडे पे मेरे लिए स्पेशल वो नहीं किया, उसने ऐसे कर लिया, उसने वैसे कर लिया, ओ उसने ये किया मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो यही सब चलता रहेगा, क्योंकि लगातार आपकी खुशी आपके एनवायरमेंट से डिराइव हो रही है। ठीक है। लेकिन जिस दिन मिरर प्रैक्टिस आप अच्छे से करते हो, उस दिन आपको आप यू स्टैंड टॉल इन योर ओन वर्ल्ड and everybody else is there around you. They are also loving you madly. Why? Because you are loving yourself madly. Okay, so much that you are the most important person. You have to be the most important person of your life, isn't it? You have to be the most important person of your life. आपसे important कोई भी नहीं है, ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए। तो मैंने बताया था ना, पुराने जमाने में जब भगवान धरती पे होते थे, जब कृष्णा जी होते थे, जब सब धरती पे थे ये लोग, मतलब थे भगवान ही इंसान के रूप में आए हुए थे, तब उनके भगवान गोविंद होते थे। और गोविंद होता था गु में बिंद, यानी कि गु इज अर्थ, पूरी अर्थ है ना, बिंद मतलब बिंदु, और गोविंद अपने अंदर है, हाँ, मैं हूं, आप हो अपने लिए। दैट मीन्स यू आर द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड यू, दैट इज द बिगेस्ट गॉड, and whatever force of the universe is there within you, you can transform this world, you can transform your life, you can, if you fix yourself, you can fix everything around. It is as simple as that. Never try to fix things outside, it will not work. Okay, we need to fix ourselves. So working on ourselves is very important. सबका अलग तरह का इमोशनल जर्नी होती है लाइफ में, बट डजेंट मैटर। प्रैक्टिसेस इसीलिए तो हम करते हैं ना, जैसे ये बहुत टफ प्रैक्टिस है, ये बहुत इजी प्रैक्टिस नहीं होती है। जो लोग लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं वो ऐसे बिहेव करे, वो इस जॉब में नहीं इस जॉब में जाए, वो यहाँ नहीं वहां रहे, वो मेरे लिए ऐसे करे, वो वैसे कर ले, तो उन सब की वो एक के बाद एक दुख आते ही रहेंगे जिंदगी में, तो वो खुशियां छप्पर फाड़ के कभी आएंगी ही नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को फिक्स करने पे पूरा अटेंशन, फोकस, एनर्जी, सब कुछ डालो। And then when you fix yourself, you will see everything in the outside world. The same person is doing something his way, but we don't care. I mean, like, we might just advise at a very platonic level. We might just advise that I think, this is how, try doing it like that, and you'll become happier, or things may just start working out in your life, that way. So it becomes like a very nice advice to someone which is not coming from deep down negative emotions. like एक मैं अगर डीप डाउन नेगेटिव इमोशन से किसी को एडवाइस दे रही हूँ, तो वो बहुत उसमें इमोशनल वर्ड्स होंगे, मेरा टोन आवाज का अलग हो सकता है, कुछ अलग हो सकता है। लेकिन अगर आप बहुत ही प्लेटोनिक लेवल पे एक बहुत गुड फ्रीक्वेंसी में आप हो, और फिर आप किसी को कुछ एडवाइस दे रहे हो, तो उसका इफेक्ट अलग होगा, क्योंकि उसमें आपके इमोशंस नहीं आ रहे। मतलब बहुत सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव आपके अंदर है, आप उसके साथ किसी को एडवाइस दे रहे हो दैट व्हाई डोंट यू डू दिस। ओके, सो इट विल बी वेरी डिफरेंट। तो उसमें वो इमोशंस नहीं आएंगे, और अगले को भी वो चीज समझ आएगी, क्योंकि कोई भी इमोशनली वीक लोगों के साथ रहना नहीं चाहता। ठीक है, उनको रहना पड़ता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को स्ट्रेंथन कर ले। मैं बार बार EQ की बातें करती हूँ, है ना, इमोशनल क्वोशंट। इंटेलिजेंस क्वोशंट तो किसी में भी हो सकता है, बहुत लोग होते हैं, हम सबका इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन हमारा इमोशनल क्वोशंट शायद इतना ज्यादा हाई नहीं है, और उसमें बहुत डिप्स, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो उसको थोड़ा सा, बट इमोशंस आर ब्यूटीफुल, ह्यूमन बीइंग्स के पास ये ट्रेट होता है, बहुत अच्छी चीज है, बट फील इट एंड एग्जॉस्ट देम ऑफ, डोंट कैरी देम विथ यू, राइट? यू फील इट, एग्जॉस्ट देम ऑफ, फील इट, हो गया, बस खत्म। उसके बाद वापस अपने आप के पास आ जाओ, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, and I'm going to make it the best possible ever, and this is what I am going to be, a global brand by my name. Okay, so my company, whatever it is that you do, that I will become, I am a global brand. I have that kind of a worth and a capacity that I can do anything that I want to, by my own merit. Of course, then when you stand tall alone and you are at a super successful podium, and then you say that I would definitely like to give credit to all these people in my life. But everyone who's gone there has done it because of their own merit, isn't it? At the end of the day, advisors, support, ये सब तो family करती ही है,
बट आप अपनी ही मेरिट पे उस जिंदगी के उस मुकाम पे पहुंचते हो जहां पे आपने सपने में भी नहीं सोचा था. And we all don't have a choice to become average. That is not a choice I've ever given you. I hate mediocrity. I hate being average. Okay? And you don't have to be that. That's very, very clear. Never, whenever you're taking a step forward in your life, see, is this average or is this excellent or outstanding or phenomenal? If it is average, don't do it. Okay? Don't be an average person. Don't behave like an average person. So that is the only way, which is you're constantly striving yourself. You're thinking about yourself that this is how I need to change and this is what I need to do in my life. And I have to work on these areas, while at the same time you are in love with yourself. So you're not beating yourself that why are you like that? It is just a journey and you enjoy that. Have that confidence, that flair, that fragrance in your life, that look, that don't mess with me look. Okay, that's very, very important to be there in each one of us. And that naturally comes when you look at the person in the mirror and you say, thank you, and I love you for who you are. You are the freaking best person in this world. Okay, so that naturally comes to us. So we have to cultivate it in case we don't have it right now. So we need to kind of cultivate that. So then we don't need to fix the outside world because we have fixed ourselves, right? So everything outside will be fixed only. So then that situations will not come where we are complaining about situations, other people, doubt, self-doubt, all of that. While at the same time लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव कभी होता रहेगा, बट वो हमको इतना अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हमको अपनी कैपेसिटी, अपनी पावर पे बहुत भरोसा है. तो अपने आप पे, अब हम अपने आप पे ही ट्रस्ट नहीं करेंगे तो लोग हम पे कैसे ट्रस्ट करेंगे, है ना? हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो हम लोग हमसे क्यों प्यार करेंगे? हमारे कोलीग्स हमसे क्यों प्यार करेंगे? क्योंकि हम अपने आप से ही नहीं करते. So इसीलिए it says here, when you make the magic of gratitude your way of life, वो हमारा way of life है ना, क्योंकि हम हर एक छोटी छोटी चीज को भी, हम एक सामने पड़े हुए पत्थर को भी थैंक यू बोलते हैं, तो ये हमारा वे ऑफ लाइफ हो जाता है. सो एवरीथिंग अराउंड, दुनिया में जो सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द है, दे विल मैजिकली चेंज जस्ट लाइक दैट. मतलब जस्ट लाइक यू वोंट इवन रियलाइज दैट व्हाई ऑल दिस हैज हैपेंड. एंड देन आपकी दुनिया भी जादू की तरह बदल जाएगी बिकॉज आप अंदर से बदल गए हो, आपको सेल्फ लव हो गया है. सो अपने आप, हम सारी वो चीजें, व्हेन वी हैव दैट सेल्फ लव, जब आपने अपने आप को थैंक यू बोला, अपने सोल को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने कॉन्शियस माइंड को, अपने शरीर को, अपने आप को, जो हरकतें आप करते हो उसको थैंक यू बोला, अपने आप अब आप मैग्नेट बन गए हो टू ऑल द थिंग्स जो आप अपने बारे में अच्छा बोल रहे हो. ठीक है, उनके मैग्नेट बन जाओगे. अब वो सारी लव वाली चीजें आपकी जिंदगी में आने लग जाएंगी. दिस इज हाउ ब्यूटिफुल दिस होल प्रैक्टिस इज. सो माइकल जैक्सन के सॉन्ग के बारे में बताया, हम सब ने सुना ही होगा, मैन इन द मिरर. उसके इतने अच्छे लिरिक्स है, वो हम लोग सोका गकाय में काफी गाते थे पहले. मैन इन द मिरर, उसका कभी वर्ड्स देखना, उसके सारे गूगल पे हैं उसके वर्ड्स. सो दैट्स व्हाट इट सेज, दैट चेंज द पर्सन इन द मिरर एंड योर वर्ल्ड विल चेंज. है ना? जो शीशे में जो इंसान आपको नजर आ रहा है, जो आप हो, ठीक है, उस पर्सन को बदलो तो अपने आप पूरी दुनिया बदल जाएगी. बिकॉज सब कुछ आपका मिरर वर्क है. ये बाहर की दुनिया, अंदरूनी दुनिया का मिरर वर्क होती है. सो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि 26 प्रैक्टिसेस हमने बहुत अच्छे से कर ली है. उसके बाद वी हैव कम टू अप्रिशिएटिंग आवरसेल्व्स एंड गिविंग अ पैट ऑन आवर बैक दैट वाओ दीप्ति, वेल डन, यू आर द बेस्ट. That way. And then you will see that your entire circumstances around you will start to change. So that is what it is. So it says that when you are grateful to be the person in the mirror, feelings of dissatisfaction, discontentment, disappointment, I'm not good enough, ये disappear होने लग जाता है. और because ये disappear हो गया, अब रिफ्लेक्शन में बाहर की दुनिया में सारी एनीथिंग दैट वाज डिससैटिस्फाइंग, डिसकंटेंटमेंट वाली, डिसअपॉइंटमेंट वाली चीजें, वो सब आपकी दुनिया से निकल जाएंगी. दे विल मैजिकली डिसअपियर. और जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हमारी थी हमारे अपने लिए, जिसके कारण हमने अपनी लाइफ में बहुत डैमेज किया है, एंड वो सारी चीजें हमारी जिंदगी से धीरे धीरे जाती जाएंगी और आप देखोगे कि आपकी दुनिया वैसी चेंज हो गई है, बाहर की चीजें. एंड नाउ it says that with every moment, like आप मैग्नेट बन जाओगे, जो भी अच्छी चीज है वो आपकी दुनिया में आने लग जाएगी. And so when you're grateful to be you,
You will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. क्यों? क्योंकि वो सोल पॉलिश हो गया है हमारा, जिसमें अभी इतनी सारी एनग्रेव्ड थी चीजें, है ना? तो वो सोल को हमने पॉलिश कर दिया है, उसमें बहुत सारे टेंट्स थे, यानी कि दाग धब्बे थे। वो दाग धब्बे हमने पॉलिश कर दिया है प्यार दे दे के अपने आप को, और उसके कारण हमारे आसपास सामने जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सारे ऐसे ही आएंगे that will make us feel better about ourselves, है ना? So इसमें लिखा हुआ है, you have to be rich with good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Life is so beautiful, और बहुत easy है कैप्चर करना और एक्सट्रैक्ट करना उसमें से the most phenomenal things that you can think of. बट उसके लिए अपने बारे में गुड फीलिंग से रिच होना बहुत जरूरी है, और ग्रैटिट्यूड फॉर योर सेल्फ एनरिचेस यू. दिस इज अ लाइन विच इज रिटन हियर. ग्रैटिट्यूड फॉर योर सेल्फ एनरिचेस यू. वो हमको अमीर बना देगी अपने बारे में, अपनी जिंदगी को लेके. दैट इज हाउ इट इज. सो आज की जो प्रैक्टिस है उसमें बस यही है, सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, लुक इनटू द मिरर. शीशा होना चाहिए. अगर आप ऑफिस में हो तो इसको बाथरूम में जाके भी कर सकते हो. बाथरूम में हर जगह हमको शीशे मिलते हैं, हमको लिफ्ट में शीशे मिलते हैं अगर आप लिफ्ट लेते हो. वेल, वर्स कम वर्स, सेल्फी कैमरा, ठीक है. अगर आपके पास कोई शीशा नहीं है पूरे दिन भर और आप आज बाहर हो, तो सेल्फी कैमरा होता है हमारे फोन पे, हम उसमें देख के अपने आप से बात कर सकते हैं जब आप अकेले होते हो, ठीक है. अकेले नहीं तो लोग सोचेंगे क्या हो रहा है. सो ये वाली प्रैक्टिस जो आज की है इसमें है लुक डायरेक्टली, मतलब आप उसकी आंखों में देखो जो शीशे में आपको इंसान नजर आ रहा है, और आउट लाउड बोलो मैजिक वर्ड्स. थैंक यू, पूरे दिल से थैंक यू बोलो अपने आप को, है ना. यू कैन कीप योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट एंड से थैंक यू दीप्ति फॉर हु यू आर, एंड थैंक यू दीप्ति फॉर हु यू आर नॉट. ओके, सो ठीक है, आपकी जो कमियां हैं उनको भी आप थैंक यू बोलो, डजंट मैटर. इट्स, उनको एम्ब्रेस करो. When you become very embracive about your flaws and your shortcomings, then only self-love will establish in your life. Otherwise, how will it come? फिर आपको लगेगा पर लेकिन मैं तो ऐसी हूँ, मेरी नाक तो ऐसी है, मेरे फेस पे तो लेकिन पिगमेंटेशन है. नहीं, ऐसे कुछ नहीं. सबका कुछ ना कुछ होता है. कोई अंदर से किसी को पिगमेंटेशन नहीं, किसी को बाहर से होती है, ठीक है. सो वो सब हटाने का तरीका ये होता है कि अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करें. So look at yourself into the mirror, into your eyes, and say thank you out loud. इसमें ऑप्शन नहीं है मन में बोलने वाला, ठीक है. तो इसलिए हमारे पास चॉइस नहीं है. आज हमको जोर से ही बोलना पड़ेगा, आवाज निकाल के. So say thank you with your whole heart. Mean it more than you ever have before. Okay, with all meanings. You might feel jitters, you might feel that सिहरन हो जाती है, you might feel like crying, or any इमोशंस दैट कैन कम अप. जब सोल की पॉलिशिंग होती है तो इमोशंस आते हैं, बट इट इज जस्ट ऑल राइट. Okay, that is the process. Everything, life is a process only. Life is never the destination. So it is all right. Okay, and it's saying, say thank you for being you. So say thank you Deepti for who you are. That is what being you. Say thank you for everything that you are. So I accept myself just the way you are, and I love you Deepti for just the way you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you have used for everything and everyone else. अभी तक हमने इतना सारा ग्रैटिट्यूड किया है, रोज सुबह 10 लिखे हैं, मैजिक रॉक किया है, लोगों को किया है, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस किया है, मैजिक डस्ट एवरीवन किया है, मैजिक वॉन्ड किया है, हवा पानी सबको थैंक यू बोला है, खाने पानी को थैंक यू बोलते हैं. उसी इंटेंसिटी, उसी फीलिंग के साथ अपने आप को, अपने लिए थैंक यू, अपने आप को थैंक यू बोलो. एंड आई एम सो ग्लैड दैट दिस प्रैक्टिस हैज कम ऑन द फुल मून डे. इसको अच्छे से तरीके से अपनी तारीफों के पुल बांधो उस पर्सन को. रॉन्डा बर्न ने बोला है कि मिरर में देख के थ्री अपनी क्वालिटीज को अप्रिशिएट करो, कोई भी 3 क्वालिटीज को, लेकिन नहीं, हम बहुत सारी करेंगे, है ना. वी हैव टू स्टेप अप द प्रैक्टिस, टर्न अप द वॉल्यूम, जो पावर बुक में लिखा हुआ था, that constantly keep turning up the volume. So turn up the volume. That means volume बढ़ाओ अपने practices का, intensity, depth of the feeling. और अगर 3 लिखा हुआ है तो आप उसको 9 करो, 3 times 3, इस तरह से. सो आज खूब सारी अपनी तारीफ करनी है अपनी, और सोचो आप में क्या क्या खूबियां हैं,
कि आप बहुत कंपैशनेट हो, आप बहुत एम्पैथेटिक हो, लोगों की सिचुएशन समझते हो, आप में बहुत अच्छी स्किल है मे बी खाना बनाने की या खीर बनाने की, समोसे बनाने की, जो भी वट एवर इट इज, आप बहुत अच्छी बेकिंग करते हो, आपको बहुत शौक है शॉपिंग करने का, बहुत क्वालिटी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें आप अपने लिए खरीदते हो, बहुत वेल ग्रूम्ड रहते हो, कुड बी दैट, फिर आपके बाल बहुत सुंदर है, अपनी आंखों की तारीफ, जो भी वट एवर इट इज, इट कुड बी योर स्किल, इट कुड बी वट एवर पार्ट ऑफ द बॉडी, इट कुड बी वट एक्ट्स यू हैव डन फॉर समवन एल्स, इट कुड बी वट यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ, टू एनीथिंग दैट यू हैव डन, यू आर, उसके लिए अपनी तारीफें स्पेसिफिकली निकाल निकाल के अपने आप को थैंक यू बोलना और अपनी तारीफ करना है आज, है ना? सो इट सेज कंटिन्यू विद द मैजिक मिरर प्रैक्टिस। कंटिन्यू मतलब सिर्फ आज ही नहीं करना है, रोज करना है with the magic mirror practice by being grateful to that beautiful person in the mirror, of course for the rest of the day today, and say the magic words thank you every time you look at yourself in the mirror। 50 बार शीशा सामने आया है, कम से कम 8 बार तो हम वॉशरूम जाते ही है, तो 8 बार तो हमको शीशा नजर आ ही जाएगा, है ना? और एक बार बैठ के जब तारीफ करना है तो वो दिन में एक बार बैठ के करना होगा, किसी भी टाइम आप कर सकते हो। ब्यूटीफुल फुल मून डे, पावरफुल है, you will become a magnet to happy people, magnet to happy circumstances, happy events, happy situation, a lot of success, victory in your life. That is what it is about today's practice, है ना? इसमें लिखा हुआ है that the person who deserves your utmost gratitude is not anyone else. It is the person in the mirror who really deserves a lot of gratitude. और फिर उसके बाद हम अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे किसी भी सिचुएशन के लिए। गलतियां तो सभी करते हैं, कौन नहीं करता? और वो गलती तो वो यूनिवर्स का तरीका होता है हमको बताने के लिए कि सीख लो, ये ट्रेट आपको बदलने की जरूरत है, चुपचाप बस सीख लो और अपना आगे बढ़ जाओ जिंदगी में, है ना? तो अपना जो सेल्फ क्रिटिसिज्म जो हमने बहुत सारा किया है शायद, तो वो अब पूरी तरह से हमारी लाइफ से चला जाएगा। And now you will become a magnet to happy people, happy situations and magical circumstances. और अपने आप को बोलते रहो that I am a magnet to magics and miracles in my life all the time. I see magic. Magics are a second nature to me. And I see magics all around me. The universe always has my back. Everything is always working out for me. I am the best. Thank you so much for being you, Deepti. This is what you have to keep telling yourself. Okay, so that's what it says. When you see the magic in that person in the mirror, your whole world will change because you're seeing the magic in that mirror and that person is you. तो आपने अपने आप को पॉलिश कर लिया है और आप बहुत अंदर से, like you have become clean. So now you will become a magnet to all the happiness in the world that way. So आज की प्रैक्टिस में सुबह सुबह count your blessings, हमने 10 पॉइंट्स लिखे ग्रैटिट्यूड के, उनको रीड करके 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू आउट लाउड बोला, एक एक के बाद आउट लाउड 3 बार थैंक यू। उसके बाद आज हर बार जब शीशे में देखेंगे, रादर शीशे में डेलिबरेटली देखने के लिए जाओ एंड से थैंक यू टू योरसेल्फ, अपनी आंखों में आंखें डाल के अपना नाम लेके, ठीक है? एंड मीन इट मोर देन यू एवर हैव बिफोर। और अगर आप लिखा इफ यू रियली ब्रेव, यू अप्रिशिएट योरसेल्फ, लाइक से 3 थिंग्स अबाउट that you're grateful for about yourself. So well, bravery तो हम में कूट कूट के भरी हुई है ना? अब तो हमने उसको स्ट्राइव करके कल्टीवेट कर ही लिए, इनग्रेन्ड है अब हमारी जिंदगी में। तो अब अपनी तारीफ, इसमें 3 बोला है तो कम से कम हम 9 करेंगे। 3 से क्या होगा, है ना? 9 करेंगे। पहली बात तो अपनी तारीफ ये करना कि सुबह सुबह उठ के हम लोग 1 घंटे का ऐसा मेडिटेशन करते हैं ना, 6 से 7, इतना पावरफुल होता है इसकी वजह से ही जिंदगी, बिकॉज ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इस टाइम की, मतलब जब 17 सेकेंड में मतलब इतना पावरफुली फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ह्यूमन बीइंग की, तो सोचो 17 सेकेंड्स मल्टीप्लाइड इनटू सो मेनी है, क्योंकि पूरा 1 घंटा हम उस जोन में रहते हैं जब हम सिर्फ अच्छी चीजें सोचते बोलते हैं। सो इट इज एक्चुअली लाइक अ मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? टू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम एंड टू काम योर माइंड। सो अभी वी आर फोकसिंग ओनली ऑन वन थिंग, वॉट एवर द बुक्स आर टीचिंग, whatever I'm interpreting out of the books that we read, it is only because of the books, that I can interpret. So wo sara, it is all coming, it is like a meditation for 1 hour. So I always call it meditation, or I say that it's 6 to 7 a.m. meditation. So this meditation, when we are doing every day, our whole world has to change because it is 17 seconds into so many. So isliye
ये हो गया। उसके बाद पूरे दिन भर में शीशे के सामने डेलिबरेटली जाओ सिर्फ अपनी तारीफ करने और अपने आप को आंखों में आंखें में देख के थैंक यू बोलने के लिए, एंड सेम मिनिमम 3 थिंग्स अबाउट ग्रेटफुल फॉर। लेकिन उन्होंने बार बार हर चैप्टर में बोला है कि प्लीज प्रैक्टिस को जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा करने की कोशिश करो, एंड यू कैन नेवर डू टू मच ऑफ द प्रैक्टिस, ये लिखा हुआ है। दैट मीन्स आप कभी भी इन प्रैक्टिस की अति नहीं कर सकते। यू कैन नेवर से दैट हाँ टुडे इज इट्स नेवर इनफ, जितना करो उतना ही कम है। ग्रैटिट्यूड का तो ऐसा है, बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी उस एनर्जी में रहना, that will start transforming the world outside of ourselves. It will bring success, glory. You will become a brand for sure. Okay. And रात को सोने के पहले magic rock again, hold, sleep in that alpha state of mind, holding that rock, and think of all the good things, and then say thank you to the best thing of the day, and then go to sleep. So you're waking up with gratitude, you're sleeping with gratitude, और पूरे दिन अलग अलग तरीके से हमको gratitude करना, हम काफी कुछ सीख गए already, है ना? So yeah, this is the chapter for today. And now we go to the other book, Hero by Rhonda Byrne again. And we have to start, we are studying a chapter called Vision, है ना? आगे की सोच होना, आगे का जिंदगी में जो आगे हमको अचीव करना है उसके लिए एक विजन होना। कैसा विजन है, कैसे हम आगे की जिंदगी देख रहे हैं, बड़े बड़े सपने देखना। इन लोगों की वजह से हम बड़े सपने देखना देख रहे हैं, और बहुत ही बड़े। मतलब ये लोग बिल्कुल ही स्ट्रीट्स में रहते थे, लेकिन उनका एक विजन था कि उनको दुनिया के, दे वांट टू बिकम दैट ग्लोबल बेस्ट एंटरप्रेन्योर और व्हाटएवर, इस तरह के सपने थे। और इतने डायर सर्कमस्टांसेस में बड़े सपने देखना, जब आपको अगली मील का ही अता पता नहीं होता है कि अभी सड़क से खाना उठा के खाया है तो अगली मील कहाँ से आएगी, है ना? ये भी नहीं पता था इन लोगों को। लेकिन वो उस वक्त भी जब उनको वो मील नहीं मिल रही थी, तब भी उन्होंने अपने सपनों को अपने दिमाग से नहीं जाने दिया। So that is the kind of success stories that we are learning from. So it is, I think, Hero book is a compilation of the best autobiography. Whenever I have read autobiography, it is always of one person at a time. It's never of 12 people. This book is an autobiography of 12 people and from different fields. मतलब एक तो बिल्कुल ही कंप्यूटर विजर्ड, एक दूसरा जिन्होंने गेम्स बनाए, वीडियो गेम्स, एक जना जिसने अपना सलोन की चेन खोली जबकि उनको सिर्फ थ्रेडिंग करना आता था, ठीक है? आज मतलब उनके मेकअप प्रोडक्ट्स, एनेस्थेसिया का इतना सारा है, जीएमआर इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग करी, उसके बाद ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए कि हर बोर्ड, हर होर्डिंग तो बन गए ना ब्रांड। ये isn't it? मतलब इनका ब्रांड के नाम से, इनके नाम से काम चलता है। सो दिस इज हाउ वी कैन लर्न फ्रॉम देम। और अगर हम इनमें से एक चीज भी एक्सट्रैक्ट करें हर एक इंसान में से, तो वी विल लाइक इंस्पिरेशन यही होती है ना, दैट वी एक्सट्रैक्ट व्हाट इज इट दैट आई नीड टू डू। अब मेरी सोच कैसी होनी चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज थॉट्स एंड फीलिंग्स। whatever is thoughts is what you create, and thoughts are creating all the time. So now these are kind of channelizing the thoughts that we have in our mind as to what mindset we should have. Mindset means what are the thoughts that we should be having. So that's what we are. So next vision ke chapter mein, it is GM Rao. Hanji Meetu. GM Rao, my dream was always in my mind. Right from the beginning, I was living with my dream, alive in me, acting it out even when it was just tendrils of thought. My actions arose from the thought that my dream had already happened, and from my actions I could see the results arise. Quote, success is achieved twice, once in the mind and the second time in real world. Unquote. Yeah, I have for the longest heard this quote. I didn't know it was written by Azim Premji. It is success is achieved twice. एक बार दिमाग में और फिर उसके बाद हकीकत में। तो कम से कम दिमाग की सक्सेस तो हम अभी क्रिएट कर सकते हैं अपने आप, वो तभी तो ट्रांसलेट होगी रियलिटी में। सो दैट इज व्हाट। सो जीएमआर बोलते हैं कि शुरू से जो सपना था ऑफ बिकमिंग एन आइकॉन इन माय फील्ड, ओके, जो भी आपका फील्ड है उसमें आप बेस्ट प्लेस पे दैट यू रीच देयर irrespective of what your age is, okay? Age, gender, qualification does not matter. It is only about the mindset and the thoughts and feelings and emotions, okay? Work only on that primarily.
मत सोचो that I'm already at this age. No, you don't know. In 2 years' time, your life is going to spin around, or health will become better than before. Everything starts transforming in the fraction of a second the moment mindset changes. इसीलिए अगर आपकी एज है suppose 60 plus 70 plus, well, who cares? It really doesn't matter. No matter where you are in your life right now, this, like the mindset is going to start aligning the circumstances in our favor according to what the thoughts are. तो इसीलिए सोच, माइंडसेट बहुत जरूरी है. Enjoy that billionaire's life and make a difference to others around you. It's not never about us. Obviously, billionaire बनोगे तो इतने लोगों की livelihood आपके पैसे से चलेगी. कितना अच्छा लगेगा कि आप 100 परिवारों का घर चला रहे हो और उनको इतनी सारी सैलरी दे रहे हो, है ना, और उनकी जिंदगी में खुशियां ला रहे हो. उनके बच्चे उससे पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपकी कंपनी उनको सैलरी दे रही है उससे उनके बच्चे पढ़ाई करके अलग अलग देशों में नाम रोशन कर रहे हैं. तो जितना आप ग्रो करते हो उतनी ही आप में पावर आती है टू ट्रांसफॉर्म अदर्स लाइव्स. सो इट्स नेवर अबाउट अस. वी कैन नॉट कॉल इट सेल्फिश. Okay, if we say that, oh, I want to become a brand and a billionaire, no, yes, that's my goal, but there are so many other lives and there's so much that I'm going to add to the economy because of that. If I have that power that अगर किसी हॉस्पिटल को बिल्ड करने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए और अगर मैं उस मुकाम पे हूं कि मैं बहुत आराम से 1 करोड़ रुपए उनको दे पा रही हूँ, तो सोचो कि मैं कितने लोगों जो वहां पे उस हॉस्पिटल में हील होने आएंगे उनको कंट्रीब्यूट कर रही हूँ ना. तो ये सेल्फिश एक्ट तो नहीं हुआ कि मैं बिलियनर बनना चाहती हूँ या मल्टी बिलियनर बनना चाहती हूँ. सेल्फिश एक्ट नहीं होता. आप जो भी आपका ऑफिस है, जो आपका मोड ऑफ लिविंग है, जहां से भी पैसे आ रहे हैं, अब वहां कितने लोग काम कर रहे हैं, isn't it? बहुत सारा उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एजुकेशन पे फर्क पड़ रहा है, उनकी नॉलेज पे फर्क पड़ रहा है, हु दे आर उस पे फर्क पड़ रहा है ना. आपका जो ऑफिस होगा उसमें एक अलग तरह का फ्लेयर और डिसिप्लिन होगा बिकॉज आप इतने ग्रैटिट्यूड वर्ल्ड से निकले हुए लोग हो और इतने ड्रिवन हो. तो आपके ऑफिस में सारे लोग, जैसे रोंडा बर्न के ऑफिस में जो लोग भी काम करते हैं, वो सब ग्रैटिट्यूड में ही रहते हैं. उन सबको अपने अपने सपने अचीव करना आता है. वो सब उसी में, मतलब जो इनकी कंपनी है रोंडा बर्न की, वो उसी में रह के, वो सीक्रेट मूवी के टाइम से आज तक वो उनके साथ है. उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमको अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलना है. वो सब वो खोल रहे होंगे बट वो अभी भी इनसे अटैच्ड है. मतलब अभी भी जितनी भी किताबें हम पढ़ते हैं या जितने भी वीडियो शूट्स होते हैं उसमें वही नाम बार बार आ रहे हैं. ग्लिंडा बेल एंड दिस एंड लॉरी शॉरकोफ एंड सब सब वही वाले लोग हैं, है ना. और हर बुक के मतलब जो इनिशियली वो देते हैं तो उसमें वो नाम होते हैं. इसका मतलब है कि इतने सालों से 2004 में वो बनी हुई थी, उससे आज तक सारे टिके हुए हैं उनके पास. जबकि उन लोगों ने बहुत, वो खुद भी बहुत पैसे वाले हो गए ऑफ कोर्स बिकॉज अपने ही तरीके से ऐसे होता है. तो एक पर्सन ग्रो करता है, 1 इज द मदर ऑफ 10,000. 10,000 लोगों की जिंदगी एक झटके में बदलती है उस एक पर्सन की वजह से. सो इफ यू बिकम अ ग्लोबल ब्रांड देन यू विल kind of take 10,000 with you. You cannot walk alone. A human being is a social animal, does not work in isolation. Okay, it's always surrounded by people, always the success is because of people, always it is contribution back to the people, and it is a constant linear process that will only grow like a chain reaction. It's pretty profuse, it grows like a chain reaction. That is how it is. So this is what GMR says, that अब देखो GMR तो जहाँ एक इंसान है उनकी वजह से कितने लोगों को एंगेजमेंट मिली है फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, है ना. इतने लोग काम कर रहे हैं. एक छोटा सा एरो ब्रिज भी बनाना होता है GMR को, तो कितने लोगों को वहां से लाइवलीहुड मिल रहा है, कितने इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स उनके अंडर मतलब टीम में काम कर रहे हैं दिन रात, जो खूब पैसे कमा रहे हैं. सो इट इज नॉट जस्ट वो उस मुकाम पे पहुंचे कि वो आइसोलेशन में और बुजुर्ग इंसान है वो, लेकिन वेल आई मीन लाइक ही इज अ सक्सेस स्टोरी विद अ कैपिटल. So that is how it is. So that's what it says, that create that success in your mind, no matter what your age or whatever. You might be in the smallest of the city. ये तो ऐसे गांव में रहते थे जिसमें बिजली पानी भी नहीं था, लाइन में खड़े होके पानी मिलता था इनको. वहां से कहाँ पहुंच गए देखो. हाँ जी. Peter Foyo, virtually everything I have done in my life is not as a result of what I have studied or of how hard I worked. It is a result of visualizing and knowing I'm already there.
When I was making the secret film, I visualized the outcome I wanted multiple times during a day. I saw the outcome so clearly in my mind that it felt as though it had already happened. There is no doubt in my mind that visualization was the most powerful thing I did to help make The Secret a huge success. Yeah, thank you, me too. We'll be able to read only so much today. Thank you. Thank you. So Peter Foyo says here that मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कुछ किया है, पीटर फोयो बोल रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है वो इसकी वजह से नहीं है कि मैंने पढ़ाई कितनी की है या मैंने एज अ स्टूडेंट कितना हार्ड वर्क अपनी जिंदगी में किया है या प्रोफेशनल वर्ल्ड में हार्ड वर्क किया है। हार्ड वर्क से सक्सेस और पैसा नहीं आता। सो जो परसों सौम्या ने वो डाला था रोंडा बर्न का इंटरव्यू, कुछ 30 मिनट्स का था, उसको ध्यान से सुनना आज। ठीक है, टाइम नहीं है तो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देना, 1.5x पे लगा के सुनना, बट लिसन टू इट। उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है कि पूरी दुनिया ये समझती है कि हार्ड वर्क पेज। इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट लाइन टू फ्रेम। It's never about the hard work. It is about the thoughts and feelings and emotions and your mindset. So it's not the hard work that pays you. You don't have to work hard to become rich. So that's what he says here, that it's not because of your study or your educational qualification or the hard work that you do. And it's that doesn't make you a successful person. It's the result of visualizing, okay, forming images in the mind, seeing them through the mind's eye and thinking about them again and again. So he says it's the wherever I am in my life, it is as a result of visualizing and knowing I'm already there, being that person who's already reached that goal in your mind. इमेजिनेशन कहते हैं ना, वो रोंडा बर्न ने बोला था इसी इसमें मैजिक बुक में, इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट, चैप्टर नंबर 13 में। सो इमेजिनेशन, वो आप उस कारपेट पे बैठ के अभी कहीं पे भी जा सकते हो, आप स्पेन में जा सकते हो, आप इटली में उस दुकान के सामने खड़े होके पिज्जा खा रहे हो सकते हो। इमेजिनेशन में तो आप कुछ भी कर सकते हो। इमेजिनेशन में आप अपनी $1 बिलियन कंपनी चला रहे होते हो, उसके मालिक होते हो। इमेजिनेशन में आपके पास प्राइवेट जेट है। इमेजिनेशन में आप बहुत लोगों की, पूरी दुनिया में आपका फैला हुआ बिजनेस है, आपके अलग अलग कंट्रीज में घर है, आप अमेजिंग ड्रीम होटल्स में जाके रुक रहे हो इमेजिनेशन में। इमेजिनेशन में बहुत अच्छे दोस्त आपकी जिंदगी में, आई थिंक बहुत बड़ी रिचनेस होती है जब बहुत अच्छे दोस्त हमारी जिंदगी में होते हैं, बहुत खुशियां आती है उनसे, उन्हीं की वजह से लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है कई बार। सो इमेजिनेशन में आपके बहुत मीनिंगफुल अच्छे दोस्त हैं, हु आर लाइक योर ओन फैमिली, दे आर योर हार्ट, दे आर योर सोल, यू सो अंडरस्टैंड ईच अदर, हैव गुड टाइम्स विद ईच अदर, है ना। वो आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ होते हैं। जिंदगी में कभी फॉल हो गए, एक दोस्त अपीयर हो जाएगा आपका हाथ पकड़ने के लिए और बोलेगा डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, एंड दैट बिकम्स योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ दैट यू हैव अर्नड इन योर लाइफ। सो इमेजिनेशन में तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो करो ना, उसी को तो विजुअलाइजेशन बोलते हैं। सो विजुअलाइज इट, एंड ही सेड दैट आई ऑलवेज सॉ दैट आई एम ऑलरेडी देयर, मतलब जहां पे भी वो पहुंचना चाहते थे। फिर रोंडा बर्न ने अपने उस इंटरव्यू में जो बोला था वही चीज यहाँ पर है। इसमें है दैट जब वो सीक्रेट मूवी बना रही थी तो उन्होंने ऑलरेडी तो उन्होंने उसमें वो बोला था कि रोज वो 11 बजे बैठते थी पूरी टीम और वो विजुलाइज करती थी इस मूवी का आउटकम, की मूवी कितनी आसानी से बन रही है, कितने लोगों तक रीच हो रही है, मिलियंस ऑफ लाइव्स इसकी वजह से चेंज हो रही है, ये बेस्ट सेलर स्टैंड्स पर है, ये न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर टाइम है, ये सब उन्होंने ऑलरेडी विजुलाइज कर लिया था। अभी तो पिक्चर बनाने को भी पैसे नहीं थे क्योंकि 2 मिलियन डेट चल रहा था उनका, तो उन्होंने क्रेडिट पे बनाई थी ये वाली मूवी। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें ये वो लोग कलेक्टिवली बैठ के विजुलाइज करते थे कि मतलब there's so much of a difference that's being made in people's lives because of this। और उन्होंने जो आउटकम था, फाइनल आउटकम, उसको अपने मन की आंखों से बहुत क्लियरली देखा था, एज इफ वो ऑलरेडी हो चुका है और उनको कितना ज्यादा रॉयल्टी मिल रही है, पैसिव इनकम आ गई है, दुनिया में लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, वो इनको सक्सेस स्टोरीज बता रहे हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी भी यही करते थे, हमने पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में जो पढ़ा था, तो उनकी हर संडे को मास होता था, नॉट द वो वाला मास, मतलब
चर्च वाला मास नहीं, मतलब वो लोगों को एड्रेस करने चाहते थे ऐसे ही, मतलब ऐसे ही जैसे हम ये साथ में स्टडी करते हैं ना, वैसे वो अपनी बुक की जो टीचिंग्स थी वो पढ़ाते थे हर संडे को ऑडिटोरियम्स में और अलग जगह पे। तो वो जब भी ऑडिटोरियम में जाते थे तो वो ऑलरेडी विजुलाइज करके जाते थे कि वो लोगों का मतलब ताली की आवाज सुन लेते थे। वो ये देखते थे कि पूरा हॉल भरा हुआ है, लोग खड़े हुए हैं साइड्स में, जो एलीज होती हैं साइड में, वो ये भी देख लेते थे कि लोग आजू बाजू खड़े हुए हैं, पूरा हॉल चकाचक भरा हुआ है, मतलब एक सीट भी नहीं है, खाली पूरा भरा हुआ हॉल है। ठीक है, और उनके लेक्चर के बाद सब उन हैंडशेक करने के लिए उनसे आ रहे हैं स्टेज के पास, और उनको उनकी हैंड का शेक फील करते थे, द फील ऑफ पीपल्स हैंडशेक। और ये एनविसेज का ये सोचते थे, वो इमेजिन करके जाते थे कि वो लोग अपने अपने ह्यूज स्टुपेंडस सक्सेस स्टोरीज उनको बता रहे हैं कि हमारी जिंदगी में ये हो गया, दिस इज द चेंज वी हैव मेड, हेल्थ रेवोल्यूशन आ गया, ये आ गया। वो पहले से ही विक्ट्रीज को इमेजिन करके जाते थे कि लोग उनको अपनी सक्सेस स्टोरीज बता रहे, वन आफ्टर द अदर एंड दे आर फ्लॉकिंग टू मीट हिम। ये सब वो पहले से ही करके जाते थे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में ही समझाया हुआ है, एज इफ इट्स ऑलरेडी हैपेंड। तो रोंडा बर्न भी यहाँ पे यही बोल रही हैं दैट मैंने आउटकम देख लिया था मेरी किताब की सक्सेस का कि क्या क्या होगा, और फिर एज इफ इट्स ऑलरेडी हैपेंड। So she says there's no doubt in my mind that visualization was the most powerful thing I did to help make a secret a huge success. और उसमें जो अभी ये वाला जो YouTube वाला इंटरव्यू है, अगर आपने इसमें देखा है तो उन्होंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जैक कैनफील्ड और ब्रॉक प्रॉक्टर को लेके आए थे, बिकॉज दे आर बिग नेम्स इन द इंडस्ट्री। ब्रॉक प्रॉक्टर की तो अब डेथ हो गई है, जैक कैनफील्ड हैं अभी जिंदा, बट बहुत अच्छे ऑथर हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। सीक्रेट मूवी में हमने इन दोनों के इंटरव्यूज देखे हैं, है ना। सीक्रेट मूवी नहीं देखी है तो देख लेना एक बार, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है यूट्यूब पे। 1 hour 20 minutes की है, इट्स अ स्मॉल वन। सो उनमें दोनों के इंटरव्यूज हैं, ब्रॉक प्रॉक्टर जैक कैनफील्ड के, और दोनों बता रहे हैं कि और कैसे रोंडा बर्न ने उनको मतलब जाके, ब्रॉक प्रॉक्टर हैपेंड टू बी इन द सेम सिटी वेयर शी वाज इन अ वेरी स्मॉल टाउन, imagine. So they didn't even need to take the whole crew and fly down to that city, because ब्रॉक प्रॉक्टर ने शुरू में यही कहा था कि आप आ जाओ मेरी सिटी अगर आपको इंटरव्यू करना है। ब्रॉक प्रॉक्टर के असिस्टेंट से इस तरह से बात हुई थी, और किस तरह से he happened to be in the same city where they were filming in a small town in some country, and that is how easy it was. So she says that जब मैंने ब्रॉक प्रॉक्टर को अपनी प्रेजेंटेशन बताई, रोंडा बर्न कह रही थी उसमें, तो उनको ऑलरेडी पता था कि ये सब मैनिफेस्टेशन का नतीजा है और ये सब अपने आप हो रहा है, because I was doing the right thing for the world. So he said this to Rhonda Byrne, that you're doing the right thing for the world. So the universe is assembling people, events, situations, circumstances as per your growth, as per your liking, as per how you want to reach in life, and that is what it is. So yeah, this is how much we are going to do today. Thank you so much for waking up early in the morning and coming every day to make a difference to your life. Yeah, so we are done for today. Anyone wants to share anything or add anything? Priya, you want to add anything that you felt I may have missed, or anything from your experience? Nothing, ma'am. You're absolutely flawless. We Always never are. But it's a Ma'am, day we of feel that self-love, you so I'm are. going to accept with grace. No, ma'am. It's like you never leave anything. Yeah, वो LRAG वाला है, ma'am. But you हाँ explained बिल्कुल right. बताओ, वो प्लीज बताओ LRAG वाला। LRAG Yeah. प्रैक्टिस मेरा वर्क प्रैक्टिस होती है फॉर पीपल हु आर न्यू। आई थिंक वो हम पीछे से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ना, लास्ट मेरा वर्क में किसी ने कॉपी की, उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। I have that saved in my phone, so I'll share that. Oh, perfectly. So why don't you share about that? Yeah, so LRAG practice is about loving, respecting, accepting, and paying gratitude to yourself. So for all those who are new, हम लोग सभी जानते हैं, but all those who are new to the family, so हम लोग हर रोज ये कर सकते हैं, but 27th day magic day के practice में we all do that we have to, that's LRAG. L stands for loving yourself, R for respecting the way you are, A is for accepting yourself with all your flaws, and G is for paying gratitude to yourself. So whatever the circumstances are, you have to go in front of the mirror and say, I'll out loud, obviously, that I love you with your name. I love you, Priya, for what you are.
and I love you, Priya, for what you are not. Then the second is R for respect. I respect you, Priya, as you are, and I respect you, Priya, for whatever you are not. Then A stands for accepting. I accept you, Priya, for how you are, and I accept you, Priya, for how you could not be or what you could not be. Then comes G. G stands for gratitude. So I'm so grateful to you, Priya, for whatever you do for yourself and for others. And I am grateful to you, Priya, for whatever you could not do also. So that's love, respect, accept, and paying gratitude. Yeah, this much. Thank you, you ma'am. so much. Yes, LRAG is something we have to do every day. And slowly doing LRAG, it might seem to be a very insignificant practice कि इससे क्या हो रहा है शीशे में अपने आप को देख के. But आप देखना that your outward reality will start shifting and transforming, and you will see things just start they start working out for you, and with that ease. So everything comes to me easily and effortlessly. That's also a tagline, no? So, and life is beautiful. Life is so beautiful, easy and effortless, and you will see that will just start happening. So create success in your life so that you can see it as outward reality. So वही हमने आज पढ़ा है ना कि 2 बार आप सक्सेसफुल होते हो, पहले अपना दिमाग में और फिर उसके बाद हकीकत में. So that is how we have to move forward in life. So changing mindset, very, very important. Yes, Soumya, you want to share? Hi, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. So this is a sharing and informative information to everyone that yesterday I had planned to have a fun day with myself. So I had booked to watch a movie by myself. So that was just the intention कि जाके movie देखना है, but बीच में कहाँ से घुस गया दिमाग में I have to shop for my pants also. So even though I was short on time, I was able to shop for my 2 pants within my budget. So मैंने कुछ भी नहीं किया था. I was just in the high frequency yesterday all day because day before yesterday was magnificent for me. So I was just in the high frequency. और जब घर से निकल रही थी, I just told to universe, let's have some magic, shall we? Let's see क्या क्या हो सकता है. Literally मैं घर से निकली, no sooner I went, बस मिल गया because I travel by public. I had to run and catch the bus because वो already आ चुका था, रुका था मेरे लिए. I caught the bus, I went there. गई, I was like, I was going to a mall. मेरे को नहीं पता था. I wanted to shop in Zudio. I was like, मेरे को Zudio चाहिए इसमें. It's like not sure. It automatically took me to Zudio. वहाँ पे गई, for the first time in my life, I went and stood in front of the rack which had the pants that I wanted, and it was in the budget. Like I literally picked it like this. और trials पे गई because I was really short on time. Trials पे गई and there was 2-3 people in the line. I was like, universe, I'm short on time, help me here. Literally 2 लोग हट गए वहां से. There was just one person ahead of me. मैंने बोला ठीक है मस्त. I just talked to the person who was folding and then automatically एक खुल गया वहां पे. I just went, I tried और मैं वो दोनों pants लेके आई and there was queue for the billing and 5:40 को movie start होने वाला था. It was 5:32. मैंने बोला universe help here again. Literally एक counter खुला हो गया and I crashed. Okay, I mean मेरे सामने खुल गया and I just went and crashed. Actually वो पीछे वाला जो ठहरा था was like telling to the guy, was like मेरा था number और वो बोल रहा था वो आ गई तो क्या कर सकते हैं. And I was like अरे sorry मेरे को नहीं पता चला. वो बोला आप क्यों लोड ले रहे हो, आपका तो कुछ गलती ही नहीं है. And it was so fun. I just paid and I went and saw this movie. So this is the important thing I wanted to tell. It's the animated movie Wish. Everybody who is going through really tough time, like who has very much of self-doubt, negative doubts, depression, what jo bhi hai, please go and watch this because it is so uplifting and it gives you the stamina or the courage to draw power from yourself. क्योंकि ultimately power जो मैम बोलती रहती है और जो classes में होती है
आज का जो मिरर मैजिक मिरर का प्रैक्टिस है कि अगर आप में वो पावर, लाइक इफ यू रियलाइज दैट पावर इज विद इन यू कैन चेंज एवरीथिंग. सो इफ यू विश इट विल हैपन फॉर यू. ठीक है, आपके विश से बड़ा कुछ है ही नहीं दुनिया में. एंड यू आर द डिराइवेटिव ऑफ अ स्टार. ये ऐसे बहुत बहुत आई वाज क्राइंग इन द थिएटर yesterday. Like I was like इतना profound gratitude, इतना profound ये बोलते हैं ना, like literally मेरे आजू बाजू लोग बैठे हैं and I'm sniffling. I'm like because one song is there which will come and when you see it literally goosebumps हो जाते हैं. तो anybody please go and watch this Disney. Anybody who loves animation, it will be like a treat to your eyes. So please do that. So यही था मैम. Thank you so much. Name of the being in this movie, space. Soumya? Name of the movie? Movie name. Wish. 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 Yeah, I have Wish. also heard about it. Wish. Like it's a very great movie. Yeah. Okay. Wish. Great. We can all watch it. हॉल में लगी This हुई is है. सौम्या तुमने हॉल में देखी थी? theater. Yes. थिएटर में देखी थी. चलो थिएटर में जाके देखना. Even 12th Fail is very good. Which I've one? heard. 12th Ma'am, which? Fail. 12th हाँ. Fail. Oh, हाँ. it's a 12th अच्छा. fail. Okay. I have heard. I will go today or tomorrow. बिल्कुल जी जाइए. विश देखिए क्योंकि सौम्या ने रिकमेंड की है तो डेफिनेटली अच्छी होगी. एंड थैंक यू सौम्या फॉर मेकिंग द डे हैपन. संडे अ फन डे एंड मंडे इज अ फुल मून एंड फन डे. Yes ma'am. सो डबल का धमाका है आज. ठीक है. So And thank you Guru so Parab much. also. Enjoy the full moon day. Utilize the evening in the most creative and magnificent way. Thank you so much and see you all tomorrow. Bye bye. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.